Shock. Shock is a state of circulatory failure that impairs tissue perfusion, leading to cellular hypoxia. Shock is a state of circulatory failure that impairs tissue perfusion and leads to cellular hypoxia. Shock is a state of circulatory failure that impairs tissue perfusion, जिसके कारण tissue perfusion सही से नहीं हो पाता है, and this leads to cellular hypoxia. Types of shock: cardiogenic shock, hypovolemic shock, septic shock, neurogenic shock, and anaphylactic shock. Five types of shock: anaphylactic shock, cardiogenic shock, hypovolemic shock, septic shock, and neurogenic shock. There are five types of shock: A for anaphylactic shock, C for cardiogenic shock, H for hypovolemic shock, S for septic shock, and N for neurogenic shock. So, cash N. N for cardiogenic, A for anaphylactic, S for septic, H for hypovolemic, N for neurogenic. There are five types of shock, and shock is a state of circulatory failure that impairs tissue perfusion and leads to cellular hypoxia. Hypovolemic shock. Hypovolemic shock cause massive hemorrhage or fluid loss from vomiting, diarrhea या severe burn. वोमिटिंग, डायरिया या सीवियर बोन के कारण फ्लूइड लॉस या मैसिव हीमरेज, इट इज़ द कॉज फॉर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, मतलब वॉल्यूम कम हो गया है, तो दिस कैन बी ड्यू टू सीवियर हीमरेज और फ्लूइड लॉस फ्रॉम वोमिटिंग, डायरिया और सीवियर बोन. वोमिटिंग, डायरिया या सीवियर बोन के कारण फ्लूइड लॉस हो सकता है या बिकॉज ऑफ सीवियर हीमरेज. पैथोजेनेसिस. Low blood volume causes low cardiac output leading to tissue ischemia. ब्लड वॉल्यूम कम है, उसके कारण कार्डियक आउटपुट कम होगा, जिसके कारण टिश्यू इस्कीमिया होगा. लो ब्लड वॉल्यूम के कारण कार्डियक आउटपुट कम होगा एंड दिस विल लीड टू टिश्यू इस्कीमिया. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक cause will be severe hemorrhage or fluid loss from vomiting, diarrhea and severe bone. Pathogenesis. Low blood volume can cause low cardiac output leading to tissue ischemia. Hypovolemic shock causes are massive hemorrhage or fluid loss from vomiting, diarrhea or bone. Pathogenesis. Low blood volume will lead to low cardiac output leading to tissue ischemia. Anaphylactic shock causes administration of foreign body, example anti-sera, hormones or enzymes. Anaphylactic shock can be due to administration of foreign body like anti-sera, hormones or enzymes. Or polysaccharides and drugs, that is antibiotic like penicillin के कारण anaphylactic shock हो सकता है. Or following exposure to food allergens like peanut, or insect toxins like those in bee venom in sensitized individuals. So anaphylactic shock is due to administration of foreign bodies like anti-sera, due to administration of hormones, enzymes, polysaccharides, drugs like penicillin, following exposure to food allergens like peanuts, insect toxins like bee venom in sensitized individual. Anaphylactic shock can be due to administration of foreign body, example anti-sera, or hormones, enzymes, polysaccharides, or drugs like the antibiotic penicillin, or because of the exposure to a food allergen, example peanut, or insect toxin like those in bee venom in sensitized individuals. Pathogenesis. IgE mediated hypersensitivity. IgE mediated hypersensitivity reaction. IgE mediated hypersensitivity reaction with acute vasodilation that leads to vascular shock, widespread edema, and difficulty in breathing. So, anaphylactic shock का mechanism is IgE mediated hypersensitivity reaction with acute vasodilation that leads to vascular shock, widespread edema, and difficulty in breathing.
IgE-mediated hypersensitivity reaction with acute vasodilation that leads to vascular shock, widespread edema, and difficulty in breathing. IgE-mediated hypersensitivity reaction with acute vasodilation that leads to vascular shock, widespread edema, and difficulty in breathing. Clinical features: itching, hives, skin erythema, appear within minutes after exposure to allergen, followed by respiratory distress with contraction of the pulmonary bronchioles. Itching, hives, skin erythema. Itching, hives, skin erythema appears within minutes after exposure to the allergen. Itching, hives, and edema, skin erythema. Itching, hives, and skin erythema appears within minutes after exposure to the allergen. Itching, hives, and skin erythema, followed by respiratory distress with contraction of the pulmonary bronchioles. Itching, hives, skin erythema, followed by respiratory distress and contraction of the pulmonary bronchioles. Laryngeal edema results in hoarseness. Laryngeal edema results in hoarseness. Vomiting, abdominal cramps, diarrhea, and laryngeal obstruction. Vomiting, laryngeal obstruction, abdominal cramps, and diarrhea fall in blood pressure by vascular dilation. Vascular dilation के कारण blood pressure will fall. There can be vomiting, abdominal cramps, diarrhea, laryngeal obstruction. Laryngeal edema will result in hoarseness. So anaphylactic shock, the causes are administration of foreign particles like antisera, hormones, enzymes, polysaccharides, drugs like the antibiotic penicillin after exposure to food allergen, example peanut, insect toxin, example those in the bee venom in sensitized individuals. Pathogenesis: IgE mediated hypersensitivity reaction with acute vasodilation that leads to vascular shock, widespread edema, and difficulty in breathing. There is vascular shock, widespread edema, and difficulty in breathing. Clinical features include itching, hives, and skin erythema. Itching, hives, skin erythema appears within minutes after exposure to the allergen, followed by respiratory distress with contraction of the pulmonary bronchiole. Itching, hives, skin erythema, respiratory distress, followed by the contraction of the pulmonary bronchioles. Laryngeal edema results in hoarseness. There can be laryngeal obstruction. Laryngeal edema will lead to hoarseness. There can be GIT symptoms like vomiting, abdominal cramps, and diarrhea. There is fall in blood pressure due to vascular dilation. Septic shock. Septic shock is the most common cause of death in ICU. Septic shock is the most common cause of death in ICU. Cause: gram-positive bacteria is the most common cause of septic shock. Otherwise, gram-negative bacteria and fungi can also be there. Septic shock is the most common cause of death in ICU. Causes: the most common cause of septic shock is gram-positive bacteria. Can also be caused because of gram-negative bacteria and fungi. Pathogenesis: microbial products mediate various events. Microbial products mediate various events. There is activation of the inflammatory cells, that is neutrophils and monocytes. Activation of inflammatory cells, neutrophils and monocytes with the production of cytokines, interleukin 1 and tissue necrosis factor. Activation of inflammatory cells, production of cytokines like interleukin 1 and tissue necrosis factor. So these inflammatory cells and cytokines like interleukin 1 and tissue necrosis factor causes endothelial activation and systemic effects such as fever, diminished myocardial contractility, and metabolic abnormalities. The activation of inflammatory cells and cytokines like interleukin 1 and tissue necrosis factor, cytokines like interleukin 1 and tissue necrosis factor leads to endothelial activation
and systemic manifestations like fever, diminished myocardial contractility, and metabolic abnormalities. Activation of complement cascade causes endothelial activation. Activation of the complement cascade leads to endothelial activation. Endothelial activation results in production of various mediators. कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के कारण एंडोथेलियम एक्टिवेट होता है, उसके कारण इंटरलूकिन 6, इंटरलूकिन 8, एनओ और पीएएफ रिलीज होता है. Endothelial activation causes the production of various mediators like interleukin 6, interleukin 8, NO and PAF. Interleukin 6, interleukin 8, NO and PAF. This leads to vasodilation, increased vascular permeability and tissue hypoperfusion. ठीक है. इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, NO-PAF के कारण वैसोडाइलेशन होता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होता है. Activation of the coagulation cascade is activated along with endothelial activation, induces a procoagulant pathway. ठीक है. coagulation pathway endothelial activation के कारण एक procoagulant state induce होता है that causes DIC, that is disseminated intravascular coagulation, leading to tissue ischemia. Finally, multi-organ failure is seen. So pathogenesis of septic shock. माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के कारण काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं. जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स. काफ़ी सारे साइटोकिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इंटरलूकिन 1 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर. तो ये जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है और जो साइटोकाइंस है लाइक इंटरलूकिन 1 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इसके कारण एंडोथेलियल एक्टिवेशन होता है. और सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स होंगे जैसे कि फीवर, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होता है. ठीक है. सो इसके कारण एंडोथेलियल एक्टिवेशन होगा. सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस में फीवर, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज डिमिनिश्ड और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होता है. कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के एक्टिवेशन के कारण एंडोथेलियल एक्टिवेशन होता है. एंडोथेलियल एक्टिवेशन के कारण इंटरलूकिन 6, 8, NO और PAF प्रोड्यूस होता है. इंटरलूकिन 6, इंटरलूकिन 8, NO और PAF प्रोड्यूस होता है, which leads to vasodilation, increased vascular permeability and tissue hypoperfusion. इंटरलूकिन 6, 8, NO, PAF के कारण vascular permeability इंक्रीज होगा, vasodilation होगा और tissue hypoperfusion होगा. कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होगा, एंडोथेलियल एक्टिवेशन होगा, इसके कारण प्रोकोएगुलेंट स्टेट इंड्यूस होता है that leads to DIC, leading to tissue ischemia. Finally, multi-organ failure can be seen. Stages of shock: non-progressive phase, progressive phase and irreversible phase. Non-progressive, progressive and irreversible phase. Non-progressive phase में there is reflex compensatory mechanisms are activated. Reflex compensatory mechanisms are activated like baroreceptor reflex, catecholamine release, ADH release, renin-angiotensin activation and generalized sympathetic stimulation. Then cardiac output and BP are maintained, causing tachycardia, peripheral vasoconstriction and renal conservation of fluid. Non-progressive phase में reflex compensatory mechanisms are activated, जैसे कि baroreceptor reflex, catecholamine release, ADH release, catecholamine release, ADH release, renin-angiotensin activation और generalized sympathetic stimulation is there. Baroreceptor reflex, catecholamine release, ADH release, renin-angiotensin activation will be there, and there is generalized sympathetic stimulation. Cardiac output and BP are maintained, causing tachycardia, peripheral vasoconstriction and renal conservation of fluid. Cardiac output और BP maintain होता है, are maintained, causing tachycardia, peripheral vasoconstriction and renal conservation of fluid. Non-progressive phase में there is reflex compensatory mechanisms like baroreceptor reflex, catecholamine release, ADH release.
कैटेकोलामाइन रिलीज होता है, ADH रिलीज होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेशन इज देयर, एंड देयर इज जनरलाइज्ड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. Cardiac output and BP are maintained, causing tachycardia, peripheral vasoconstriction, and renal conservation of fluid. BP and cardiac output are maintained, causing tachycardia, peripheral vasoconstriction, and renal conservation of fluid. Progressive phase. Persistent hypoxia results in anaerobic glycolysis with excessive production of lactic acid. Persistent hypoxia के कारण anaerobic glycolysis होता है and there is production of lactic acid. हाइपोक्सिया के कारण एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा और लैक्टिक एसिडोसिस होता है. लैक्टिक एसिडोसिस ब्लंट्स द वैसोमोटर रिस्पॉन्स. लैक्टिक एसिडोसिस के कारण जो वैसोमोटर रिस्पॉन्स होता है वो ब्लंट हो जाता है, कॉजिंग आर्टेरियोलर वैसोडाइलेशन. Pooling of blood in the microcirculation worsens cardiac output and causes endothelial damage. Pooling of blood in microcirculation worsens cardiac output and causes endothelial damage. ठीक है, पूलिंग ऑफ ब्लड इन द माइक्रोसर्कुलेशन के कारण कार्डियक आउटपुट और ख़राब होता है और एंडोथीलियल डैमेज भी होता है. प्रोग्रेसिव फेज में पर्सिस्टेंट हाइपोक्सिया के कारण लैक्टिक एसिडोसिस होता है. पर्सिस्टेंट हाइपोक्सिया के कारण एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा. लैक्टिक एसिडोसिस के कारण वैसोमोटर रिस्पॉन्स ब्लंट हो जाता है which leads to arteriolar vasodilation. Pooling of the blood in microcirculation worsens cardiac output causing endothelial damage. ठीक है, प्रोग्रेसिव फेज में हाइपोक्सिया के कारण, पर्सिस्टेंट हाइपोक्सिया के कारण एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा. लैक्टिक एसिडोसिस blunts the vasomotor response causing arteriolar vasodilation. Pooling of blood in the microcirculation worsens cardiac output and causes endothelial damage. Pooling of the blood in microcirculation causes cardiac damage, worsens cardiac output and causes endothelial damage. Persistent hypoxia के कारण lactic acidosis होता है because of anaerobic glycolysis. Lactic acidosis blunts the vasomotor response, causing arteriolar vasodilation. Pooling of blood in the microcirculation, it worsens the cardiac output and causes endothelial damage. Irreversible phase में irreversible cell injury with lysosomal enzyme leakage further aggravates the shock state. Irreversible cell injury with lysosomal enzyme leakage. Irreversible cell injury with lysosomal enzyme leakage further aggravates the shock state. Survival is not possible even if the hemodynamic defects are corrected. अगर वो irreversible phase में चला गया then survival is not possible even if the hemodynamic defects are corrected. So irreversible phase में irreversible injury with lysosomal enzyme leakage. Irreversible cell injury with lysosomal enzyme leakage further aggravates the shock state. Survival is not possible even if the hemodynamic defects are corrected. So 3 फेज होता है. नॉन प्रोग्रेसिव फेज में कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होता है जैसे कि बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, कैटेकोलामाइन रिलीज, ADH रिलीज, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेशन, जनरलाइज्ड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. प्रोग्रेसिव फेज में लैक्टिक एसिडोसिस होता है, उसके कारण जो वैसोमोटर रिस्पॉन्स होगा वो ब्लंट होगा. पूलिंग ऑफ द ब्लड के कारण कार्डियक आउटपुट और वर्सन होता है, एंडोथीलियल डैमेज होता है. इरिवर्सिबल फेज में इरिवर्सिबल इंजरी के साथ साथ लाइसोसोमल एंजाइम लीकेज के कारण जो शॉक स्टेट है वो और एग्रावेट होता है. सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल इवन इफ द हीमोडायनेमिक डिफेक्ट्स आर करेक्टेड. मॉर्फोलॉजी. ब्रेन इस्चेमिक encephalopathy with liquefactive necrosis. ब्रेन में इस्चेमिक encephalopathy with
with liquefactive necrosis, ischemic encephalopathy with liquefactive necrosis, heart coagulative necrosis, heart में coagulative necrosis, brain में liquefactive necrosis, adrenals cortical lipid cell depletion, cortical lipid cell depletion in the adrenals, kidney में acute tubular necrosis, ATN in kidney, lungs में shocked lungs with diffuse alveolar damage, shocked lungs with diffuse alveolar damage, ब्रेन में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है, देयर इज इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी, हार्ट में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, एड्रिनल्स में देयर इज लिपिड सेल डिप्लीशन, कॉर्टिकल लिपिड सेल डिप्लीशन, किडनी में अक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस होता है, लंग्स में शॉक्ड लंग्स विथ डिफ्यूज alveolar डैमेज, शॉक्ड लंग्स विथ डिफ्यूज alveolar डैमेज, ब्रेन में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होगा, इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी होता है, हार्ट में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, लंग्स में देयर इज डिफ्यूज alveolar डैमेज, लंग्स में डिफ्यूज alveolar डैमेज, कॉर्टिकल्स में एड्रेनल्स में कॉर्टिकल लिपिड सेल डिप्लीशन, किडनी में अक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन में होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हार्ट में होता है, अक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस किडनी में होगा, एड्रेनल्स में कॉर्टिकल लिपिड सेल डिप्लीशन होता है, लंग में शॉक लंग्स विथ डिफ्यूज alveolar damage, shocked lungs with diffuse alveolar damage. Clinical presentations include hypotension, weak and rapid pulse, hypotension, weak and rapid pulse, tachypnea, cold, clammy and cyanotic skin, cold, clammy and cyanotic skin, urine output will be decreased, okay, and there is DIC in the later stages. हाइपोटेंशन, शॉक में क्या क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, पल्स विल बी वीक एंड रैपिड, टैकिपनिया, कोल्ड एंड क्लैमी साइनोटिक स्किन, cold, clammy and cyanotic skin, decreased urine output and DIC in the later stages. Clinical presentation, hypotension, weak and rapid pulse, the skin will be cold, clammy and cyanotic, decreased urine output and DIC in the later stages.